Namaskar, ladies and gentlemen, Shri Raghubar Das, Honorable Governor of Odisha. Ladies and gentlemen, may I request all to kindly rise in honor of our national anthem. जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशिष मांगे गावे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Ladies and gentlemen, may I request you to kindly join me in extending a very warm and hearty welcome to our chief guest, Shri Raghubar Das, Honorable Governor of Odisha, to this international convention on millets, brought to you by the Department of Agriculture, Government of Odisha. We also extend a very warm and hearty welcome to all our distinguished and esteemed dignitaries who have joined us and are on the dais. We'd firstly like to do the formal welcome of our esteemed dignitaries, starting with our Honorable Governor. And to do this, may I firstly request our Honorable Minister, Shri Ranendra Pratap Swai, Honorable Minister of Agriculture, Farmers Empowerment, Fisheries and Animal Resource Development, Government of Odisha, to kindly welcome our Honorable Governor of Odisha to this International Millets Conference and to its valedictory function. May I request everybody to please give a hearty welcome once again to our Honorable Governor. Thank you, Honorable Minister. May I once again request our Honorable Minister, Shri Ranendra Swai, to kindly welcome our Honorable Minister of ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare, Government of Odisha, Shri Jagannath Sarakar. A beautiful handloom uttariya from Kotpad. May I request Dr. Arvind Parhi to kindly welcome our Honorable Minister, Shri Ranendra Swai. May I request once again Dr. Arvind Parhi to do the honors in welcoming Shri Asit Tripathi, Principal Advisor to Honorable CM Odisha and Chairman of WODC. Thank you. May I now request Shri Prem Chandra Chaudhary and request him to kindly welcome Srimati Basanti Hemram, Honorable Minister of Women and Child Development, Mission Shakti, Government of Odisha. May I once again request Shri Prem Chandra Chaudhary to kindly welcome Shri Shubhakant Panda, President of FICCI. Thank you. Ladies and gentlemen, we have a unique way of commencing our programs.
and that is by watering the plant. And may I please request our Honorable Governor of Odisha, along with esteemed dignitaries, to kindly water the plant. This is a beautiful green way of commencing a formal function, and our small gesture of nourishing Mother Earth in return for her immense and unconditional love of nourishing one and all on this planet. Thank you, Honorable Governor and our esteemed dignitaries, for watering the plant, a unique green way of commencing an auspicious occasion. Ladies and gentlemen, I extend a very warm welcome to all to the International Convention on Millets. The United Nations has declared 2023 as the International Year of Millets, and Odisha has celebrated this year through various promotional millet activities. Under the leadership of our Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik, Odisha has also dedicated 10th November as the Millet Divas or Mandia Divasa. With a vision to take Odisha Millet Mission to the next level, Government of Odisha has organized this two-day international convention on millets with a very beautiful theme, Millets, Ancient Grains for Modern Challenges. Through various engaging activities showcasing emerging technology, this convention will focus on the tribal heritage of millets and showcase success stories of millet entrepreneurs of Mission Shakti groups. And leading the Odisha Millet Mission in the state and the country is none other than Dr. Aravinda Kumar Pari, Principal Secretary of Agriculture and Farmers Empowerment Department in the Government of Odisha. And may I request you, sir, to kindly make the welcome address. Thank you. Samastanko namaskar. At the outset, I welcome Honorable Governor, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Empowerment, Government of Odisha, Principal Advisor to Honorable CM and Chairman, Western Odisha Development Council, Honorable Minister, ST and SC, OBC Development and Minorities Welfare Department, Honorable Minister of Mission Shakti Departments, my colleagues on the dais, President FICCI, farmers, समस्त चाषी भाई भौणी एवं मिशन शक्ति भाई भौणी मानकु मध्य हार्दिक स्वागत जनाऊँगी एवं अन्य जो माने अतिथि अच्छा से भितर वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UN agencies, representatives from Africa and few other countries, scientific community, startups and many others. एवं आम गहन पद्म विभूषण श्रीयुक्त सुदर्शन साहू आपण को आम यही सभा को स्वागत जनाऊँ। एबे जमती घोषणा करागला नवेम्बर 10 को ओडिशा सरकार मांडिया दिवस बा मिलेट दिवस हिसाब रे घोषणा करचंती। ओडिशा इज द ओनली स्टेट and the first state to dedicate a day for millets. We feel proud of it and आपण मानकु मांडिया दिवस रो समस्तंको आमे अभिनंदन जणाउछु। It has been a privilege to be a part of the International Convention on Millets. I would like to emphasize once again that Odisha is the only state to organize an international convention during the International Year of Millets 2023. It was very motivating to see spirited participation of the farmers, women self-help groups, FPOs, MSMEs, startups, FMCG companies, chefs, hotel and restaurant associations, NGOs, students, and many others in the international convention. आपण माने जो माने विभिन्न हॉल रे टेक्निकल सेशंस रे योगदान करथिबे देखिथिबे आमे 200 टा नेखा चेयर पकईथिलो किंतु पाखापाखि 40-50 जण ठिया हेकरी भी सेही सेशन गुडी करे से माने पार्टिसिपेट करथले। दैट स्पीक्स ऑफ द सक्सेस ऑफ आवर कन्वेंशन। Suggestions were received on how emerging technologies that can improve the income of the millet farmers, insights into the consumer behavior on dietary shifts, how millets can play a role in mainstreaming the millets and also taking care of the lifestyle diseases were discussed.
we also discussed on the experiences of food bloggers and also restaurant industry in setting the trends in this transformation. Feedback from students as to how millets and their village history can shape the next generation was also discussed, and it was very heartening to see the participation of the students. Renowned experts in the millet ecosystem deliberated on a policy roadmap for the future of millets. All these suggestions shall lead to Bhubaneswar Declaration on Millets. Let me repeat, based on the recommendations that we received in this International Convention on Millets, we'll collate them and come up with the Bhubaneswar Declaration on Millets that will shape not only the policy of our state, but also that of other states and maybe a few other countries in the planet. Let me announce here with confidence that decades of quinoa is coming to an end, and the decade of millets is now shaping to join, beginning from now onwards. I thank everyone for actively participating in the International Convention and sharing their insights, which has made this a very memorable and rewarding experience. We reiterate the resolve to take millets to millions and give the humble crop its rightful place in farms as well as in plates. ମୁଁ व्यक्तिगत भाव में डायरेक्टर एग्रीकल्चर एवं तांकर एंटायर टीम फिकी टीम को व्यक्तिगत भाव में कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची सम्मेलन सफल आयोजन करथिबारु एवं जो माँ भौणी मैंने आछंती मिशन शक्ति ग्रुप एवं चाषी भाई भौणी मैंने आछंती तांको आउ थरे एही सभा को हार्दिक अभिनंदन जणाउछि। समस्त को नमस्कार। वंदे उत्कल जननी। Thank you, Dr. Arvind Pari, for giving us an overview of this 2 days International Convention of Millets. Ladies and gentlemen, we have with us Shri Subrakanta Panda, President of the Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI. His impressive career includes serving as Chairman of the Odisha State Council, the National Manufacturing Committee, and as the President of the International Chamber of Commerce. I would like to now invite Shri Subrakant Panda, requesting him to kindly address us. His Excellency Shri Raghubar Das Ji, Honorable Governor, Shri Ranendra Pratap Sai, Honorable Minister, Shri Asit Tripathi, Principal Advisor to Honorable Chief Minister, Honorable Minister Shri Jagannath Saraka and Srimati Vasanti Hemram, Dr. Arvind Pari, Principal Secretary, Shri Premchand Chaudhary, Director, Agriculture and Food Production. Ladies and gentlemen, at the outset, I'd like to welcome all of you to the valedictory session of this two-day international convention, and thank the Government of Odisha and specifically the Department of Agriculture and Farmers Empowerment for giving FICCI the opportunity to be the industry partner for this very important event. We have had several engagements with the Government of Odisha, and it is a pleasure to be able to showcase the state's progressive and investor-friendly policies to India and the rest of the world. As you just heard, millets are described as superfoods that can potentially provide a solution to rising gut-related diseases and metabolic disorders, and they are, of course, a source of major nutrients, including protein and micronutrients such as vitamins and antioxidants. What makes it important is that it requires less water and can be grown in difficult conditions, and most importantly, I believe, it is considered a reliable grain to protect India's nutritional and food security, and of course, a means to boost farmers' income. As you just heard, the United Nations has declared 2023 as the International Year of Millets, based on a proposal by India, which was supported by 72 nations. But I think it is a matter of great pride that Odisha has taken the lead even before this by establishing the Odisha Millets Mission in 2017, and commissioning the Mandia song by Ricky Cage, who's a 3-time Grammy winner, to beautifully depict the fact that Mandia and our millets are a part of our culture. I'd like to share some data points because these are very interesting. India accounts for 80% of Asia's production and 20% of global production, and the average yield is also higher than the global average yield. We are amongst the top 5 exporters globally, and there has been an approximately 20% increase in exports to a little more than $75 million in 2022-23. And of course, the PLI, the Production Linked Incentive Scheme for the food processing industry, which has an outlay of nearly 11,000 crores over 7 years, has provided and will continue to provide a boost to food processing and specifically to items like millets.
To talk a little bit about the notable achievements of the Odisha Millets mission, there has been improved technology demonstrations on farmer fields, which has gone from 3,300 hectares covering 8,000 farmers in 2017 to 1.35 lakh hectares covering more than 2.2 lakh farmers in Kharif by 2023-24. The Mission Shakti women's self-help groups operate 173 millet tiffin centers and also Millet Shakti cafes and outlets and millets on wheels. And being part of the public distribution system, more than 4 lakh quintals of ragi has been distributed to 1.14 crore PDS card holders in 14 districts of Odisha, leaving a noticeable impact on nutrition. All of this has been made possible by a nearly 2,700 crore budgetary allocation over 4 years and a steep increase in incentives for millet cultivation. Finally, I'd like to talk a little bit about FICCI. We are India's oldest apex business chamber, which was established in 1927 with the blessings of Mahatma Gandhi. And we have a broad engagement in agriculture and food processing sectors and have been instrumental in working closely with the Ministry of Agriculture, Government of India to approve guidelines for anchoring large-scale PPP projects to help small farmers with end-to-end linkages from seeds to markets. We also helped set up the project management unit in the ministry, which we will look to activate to explore millet-based PPP projects in Odisha. We were the industry partner for the recently concluded World Food India event in Delhi, and will explore if exhibitors and participants who were there will be interested to partner with the Odisha Millets mission. And finally, every meal hosted in FICCI includes at least one millet-based item. I express gratitude for the opportunity to work together with the Government of Odisha and specifically the Department of Agriculture and Farmers Employment. We will look to leverage our network of members within India and internationally, especially in Africa where we have a big presence, to act as anchor partners for various millet initiatives of the Government of Odisha, and will play the Mandia song at our upcoming AGM next month. I thank you all thank the department for the opportunity to work with this and wish this event grand success. Thank you. Thank you, Shri Shubhrakant Panda, for sharing with us the various initiatives by FICCI. Ladies and gentlemen, we have with us Srimati Basanti Hembram, the Honorable Minister of Women and Child Development and Mission Shakti from Government of Odisha. And may I now request Honorable Minister to kindly address the esteemed gathering. समस्त को नमस्कार। आज ओडिशा पाई एक गौरवर दिन। समग्र भारत वर्ष रे प्रथम राज्य भावे ओडिशा आयोजन करछि आंतर्जातिक पुष्टि शस्य सम्मेलन 2023। आज आंतर्जातिक पुष्टि शस्य सम्मेलन मुख्य अतिथि मान्यवर राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय, उपस्थित एग्रीकल्चर मिनिस्टर रणेंद्र प्रताप स्वाई महोदय, मान्यवर मंत्री एसटीएसी जगन्नाथ सारका महोदय, एग्रीकल्चर डायरेक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी, प्रिंसिपल एडवाइजर टू ऑनरेबल सीएम ओडिशा चेयरमैन WOCD श्री असित कुमार त्रिपाठी, एग्रीकल्चर डायरेक्टर प्रेमचंद चौधरी एवं उपस्थित समस्त भाई और भौणी माने समस्त को शुभ संध्या। आज जो आंतर्जातिक पुष्टि शस्य सम्मेलन 2023
राज्य सरकारଙ୍କର विभिन्न विभागर जो अधिकारी माने उपस्थित अछंती भाई और भौणी माने उपस्थित अछंती एवं आमर प्रेस मीडिया समस्त बंधु माने समस्त को पुणी आउ थरे आज सम्मेलन को मु स्वागत जनाऊँगी। आम राज्य रे कृषि क्षेत्र को बहुत गुरुत्व दिया जाउछि। राज्य सरकार कृषि योजना भित्तिक कार्यक्रम जोगु आज ओडिशा खाद्य शस्यर एक बड़का राज्य भावे सम्मानित, किंतु पारिपार्श्विक परिवर्तन तथा दैनंदिन जीवन शैली परिवर्तन जोगु आम खाद्यर पोषक तत्व ह्रास पाइबार लगी। एही परिप्रेक्षी रे माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक दिग्दर्शन रे आमर पुरातन पुष्टिशस्य बा मिलेट रो चाष और खाद्यर व्यवहार को पुनर्जीवित करा जायछि। कारण यही शस्य रे अति प्रचुर परिमाण कैल्शियम प्रोटीन फाइबर विटामिन मिनरल्स जहाँ खाद्यर गुणात्मक प्रकृति उन्नति आनिबा सह राज्यर कुपोषण को दूर करिबारे मध्य साहाय्य करिबा। ओडिशार आदिवासी अधुषित अंचल रे पुष्टिशस्य बा मिलेट को पुनर्बार चाष करने निमंते मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय तत्वावधान 2023 मसीह आरंभ होता एक स्वतंत्र कार्यक्रम ओडिशा मिलेट मिशन। यही पुष्टिशस्य बा मिलेट बहुड़ प्रचार सह फार्म रू प्लेट जाए मांडियार पहुँचाइबारे राज्यर माँ मानकर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य मानक द्वारा पुष्टिशस्यर प्रक्रियाकरण एवं पुष्टिशस्यर विभिन्न प्रस्तुत विभिन्न खाद्य सामग्री से माने जो प्रस्तुत करुचंती मिशन शक्तिर सहभागितारे वर्तमान आम राज्य रे 8टी मिलेट शक्ति कैफे 7टी मिलेट शक्ति आउटलेट 6टी मिलेट अनहुइल 170टी मिलेट टिफिन सेंटर एवं प्राय 1500टी टिफिन प्रक्रियाकरण यूनिट खोला जायछि। महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा समन्वित शिशु विकास योजना रे पुष्टिशस्य को जिला खनिज प्रतिष्ठान अधीन रे बंटा जाउछि। मांडिया उत्पादन क्षेत्र में ओडिशार सफलतार कहानी आज अन्य राज्य मानक पई प्रेरणा होइछि। ओडिशा मिलेट मिशन ढांचा रे मांडिया उत्पादन को प्रोत्साहित करिया पई नीति आयोग परामर्श मध्य दैछन्ति। राज्य रे मिलेट चाष को त्वरान्वित करने सह एहार प्रचार करिया पई ओडिशा मिलेट मिशन रा प्रयास को निश्चित धन्यवाद जनाऊँगी। यही सम्मेलन माध्यम राज्य देश अंतर्जातीय स्तर रे मिलेट रा प्रसार आहुरी व्यापक हेब। आधुनिक समस्या पाई ये प्राचीन शस्य निश्चित भाव में मनुष्य समाज रा पुष्टि जोगाण को समृद्ध करी एक सुस्थ समाज रा प्रतिश्रुति बहन करिबा। रोची समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। Thank you, Honorable Minister, for sharing with us the various initiatives in your department to promote the millet mission in the state of Odisha. Ladies and gentlemen, we have with us Shri Asit Kumar Tripathi, Principal Advisor to the Honorable Chief Minister and also the Chairman of the Western Odisha Development Council. He is the former Chief Secretary to Government of Odisha. His distinguished and illustrious career spans key roles in various sectors, including the industrial development, energy, and tourism. With these words, may I now request him to kindly address us.
His Excellency, the Governor of Odisha, the chief guest of this function, Honorable Minister, Agriculture and Farmers Empowerment, Sri Swain, Honorable Minister, Sri Jagannath Saraka, Honorable Minister, Srimati Basanti Hamram, President FICCI, Subrakant Panda, my colleagues in the government, Principal Secretary Arvind Padi, his young directors, Prem and Rohit, distinguished guests, all the invitees from India and many from abroad, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my warm greetings to the new governor, His Excellency, who is present in his first function. This is his first public function in the state. On everybody's behalf and my personal behalf, I extend the warmest greetings to him and convey that let him have a memorable stay in our state, sir. I stand here really impressed by the efforts taken by the Agriculture and Farmers Empowerment Department under the dynamic leadership of our minister and a very, very passionate team led by Arvind Padi, who, as you know, is a doctorate in agriculture and lives and breathes agriculture and for some time Mandya. And whenever I take a meeting and interact with him, he definitely discusses millet with me. And what I see today is the culmination of all their efforts. A very distinguished guest from Manila just met me and mentioned to me, this is one of the biggest millet conventions he has seen. So, as always, under the leadership of our Honorable Chief Minister, Odisha is showing the light to the country. Mate Arvind Padi कहले जे आजी होची मिलेट दिवस एवं गत वर्ष मार्गशीर प्रथम गुरुवार दिन माननीय मुख्यमंत्री मिलेट दिवस घोषणा करथिले एवं भारत रे आस्ते आस्ते यही ओडिशार जो दिवस होईची मु भावुची प्रतिपादित हबो आ आमे जेमिति अनेक क्षेत्र रे देश रे लीडरशिप नहींचु एथरे मध्य नेबु पिला बेले आमे मांडिया खाउथुलु जिते पेट फेट खराब होता मांडिया खाऊलु ब्रेकफास्ट खाऊलु पश्चिम ओडिशा रे मांडिया बहुत खाऊले लोक किंतु मझिरे एटा लुचिगला मांडिया आ मिलला नहीं वर्तमान मांडियार इम्पोर्टेंस लोक मैंने बुझिले गवर्नमेंट बुझिले कंज्यूमर मैंने बुझिले एंड गवर्नमेंट स्पेशली आफ्टर द मिलेट मिशन वाज एस्टैब्लिश्ड public awareness has increased about the beneficial quality of mandia millets. I was told only yesterday there are 13 crore diabetes patients in India and another 13 crores are pre-diabetic, 26 crore out of 140 crores. And rice and wheat are full of glycemic material. So millets, jawar ho, bajra ho, kimba ragi ho, I believe would be a good substitute, if not whole time, in some kind of admixture. So health-wise, millet is definitely going to be mainstream in future. I have no doubt about that. In fact, today there are a lot of MSME industries in India, in Odisha, who are looking for millets. From Western Odisha Development Council, आमे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद तरफरु कलेक्टर नुआपड़ांकर अनुरोध रे गोटे मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कोमनारे करथिलु एवं गोटे मिशन शक्ति माँ मानकर गोटे कंपनी को दिया एवं से एते भल बिजनेस करुच्ची वर्तमान भुवनेश्वर लोक जाई सेठी किणुचंती. सो ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली मु भावुची मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट्स दरकार आउ ओडिशा रे तो जो भल काम हेले माँ माने हमर मिशन शक्तिर मिसुचंती 70 लाख वुमेन गोटे जो मूवमेंट आमर जो ओडिशा रे अच्छी मांडिया को सेमाने पूरा आदरी नहीं जाती एवं मांडिया आस्ते आस्ते एरिया रे ग्रो करुच्ची एवं तार प्रोडक्टिविटी मध्य ग्रो करुच्ची. गोटे चैलेंज थिला जे मांडिया रे जे आमर प्रोडक्टिविटी लो थिला ड्राई लैंड रे आ उच्चा जमी रे पानी कम
तथापि रागी मांडिया होची किंतु तार प्रोडक्टिविटी कम थिला डॉक्टर पाड़ी बर्तमान मते कहते सेटा ये किछि वर्ष भितर डबल हो गलानी जदि आउ जदि साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए ताहले जदि रागी ड्राईलैंड रे भल प्रोडक्टिविटी हम इवन धान ठारू मध्य प्रोक्योरमेंट प्राइस तार जेहेतु बेसी निश्चय फार्मर रे इनकम बढ़िबो स्पेशली सदर्न ओडिशा रे आ वेस्टर्न ओडिशा रे तेणु मु भावुची इवन फॉर फार्मर्स दिस इज ए गुड सोर्स ऑफ इनकम सिंस वी आर डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम पैडी टू डिफरेंट अदर क्रॉप्स रागी इज ए वेरी वेरी गुड अल्टरनेटिव आ गोटे कथा है जे किनोआ विषय कहले मु आई वाज डूइंग ए स्मॉल रिसर्च ऑन सुपर फूड्स वर्तमान सुपर फूड जोटा फैड हो गलानी वर्ल्ड रे किनोआ फ्रॉम मोस्टली कैनेडा इज ए $92 billion export business global size of export business quinoa is I think a minor cereal and 1 billion is 8,000 crore so multiply by 92 that is the size of business of quinoa which is like ragi India is producing about 18 million tons of millets सेतरु ज्वार होची प्राय 60% बाजरा ज्वार आउ मांडिया ओडिशा इज ग्रोइंग आई एम टोल्ड बाय अराउंड 2.5 billion tons 25 lakhs 2.5 lakhs so एथरे मध्य बिजनेस मध्य अछि not only health but also farmers income but also a lot of export potentials so from all sides it is a winner. So once again, I congratulate the Agriculture Department. As always, our Honorable Minister, Agriculture is a dynamic force. He leads his department to new areas. So under his leadership, I'm sure millets will make waves in future. Thank you very much. Thank you, Shri Asit Tripathi, for your notable address stressing on the innumerable health benefits of millets and Odisha's huge potential in this regard. Ladies and gentlemen, we have with us Shri Jagannath Saraka, the Honorable Minister of ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare Law, Government of Odisha with us today. Originating from the Raigada district, Shri Saraka began his career as an advocate and has risen to hold significant responsibilities in the government. And his dedication to the welfare of scheduled castes and scheduled tribes, minorities and backward classes has made a substantial impact. With these words, may I request Honorable Minister to kindly address us. समस्तों को जोहार आज कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित अंतर्जातीय मिलेट सम्मेलन उद्यापन दिवस रे उपस्थित माननीय राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय एवं इटी उपस्थित माननीय मंत्री श्रीयुक्त रणेंद्र प्रताप साई महोदय माननीय मंत्री श्रीमती बासंती हेम्ब्रम महोदय पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अध्यक्ष श्रीयुक्त अचित कुमार त्रिपाठी महोदय पीसीर सभापति श्रीयुक्त सुब्रकांत पंडा महोदय विभागीय प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त अरविंद कुमार पाड़ी महोदय निर्देशक श्रीयुक्त प्रेमचंद्र चौधरी महोदय विभागीय समस्त अधिकारी वृंद प्रेस मीडिया बंधुगण एवं विभिन्न अंचल आसथिबा समस्त प्रिय भाई भौणी प्रेस मीडिया समस्त को मु आज ही शुभ अवसर रे शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाऊँगी एवं प्रणाम करुछि। ओडिशार आदिवासी परंपरा संस्कृति एवं चाष पद्धति सह मांडिया एवं अन्यान्य मिलेट ओतप्रोत भाव जड़ित थिबा आमे समस्ते जानी ढीप जमी एवं कम पानी आवश्यकता करुथिबा मिलेट गरीब लोकर खाद्य बोली पूर्व समस्ते आमे विवेचना करथिले। समय क्रमे यही शस्यर खाद्य गुण जो आजिकाली लोकों
सुपरफुड वा पुष्टिशोष हिसाब रे आमे समस्त ग्रहण कलेनी। जनजाति मानक संस्कृति खाद्यपेय जीवनशैलीर पुष्टि शस्यर भूमिका देश रे तथा विश्व रे परिचय देवा एही मिलेट सम्मेलन उद्देश्य एवं लक्ष्य। गर्वर विषय जे आम राज्य रे जनजाति प्राचीन कालरू मिलेट उत्पादन करि आसुचंती। यह सेमाने खाद्य निरापत्ता को सुदृढ़ करने सह सेमानक आत्मनिर्भरशील करि पारिछि। रायगड़ा कोरापुट बलांगीर कलाहांडी मयूरभंज इत्यादि स्थान रे सुआ कांगू जना बाजरा ओडिशार पारंपरिक खाद्य शस्य को समृद्ध करिछि। मिलित जाति संघर घोषणा रे 2023 वर्ष को अंतर्जातिक मिलेट वर्ष भावे पालन करा जाउछि। मिलेट गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य रक्षा पाई यह उपदेयत प्रति सचेतना वृद्धि करने निमंते माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक ओडिशा रे मिलेट मिशन आरंभ करिसेंती। यह द्वारा मिशन शक्तिर माँ मानू एवं मिलेट उद्योगी मानू विषय रे ज्ञान कौशल प्रयोग द्वारा मिलेट चाष प्रक्रिया करी रोजगार सुनिश्चित करने सह जनसाधारण स्वास्थ्य रक्षा करा जाय पारुछि। आशा करुछि आज यही सम्मेलन विभिन्न जिलार कृषक महिला स्वयं सहायक गोष्ठी कृषि उत्पादन गोष्ठी भाग ने मिलेट मिस चाष को विज्ञान एवं प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग द्वारा परवर्ती पर्याय नेवा संपर्क जानिबार सुजोग आमे समस्ते पाइछि। अंतर्जातिक मिलेट मिशन आयोजन सरकार पदक्षेप एवं यह सह जड़ित समस्तंकर भागीदारी मिलेट को पुष्टि शस्य वा सुपरफुड्र परिचय को अधिक समृद्धि करवा एथिपाई आपण मानक समस्त महत्वपूर्ण सहभागितार आवश्यक रही। पुणी थे अंतर्जातीय मिलेट मिशन सफल आयोजन पाई विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद दे मोर वक्तव्य सांग करुछि। वंदे उत्कल जननी। नमस्कार। Thank you, Honorable Minister, for your notable address. Ladies and gentlemen, we have with us Shri Ranendra Pratap Swai, the Honorable Minister overseeing Agriculture and Farmers Empowerment, Fisheries and Animal Resources Development in Government of Odisha. He is a visionary leader championing agricultural growth. His strategic initiative focus on the sustainable farming practices and empowering rural communities. Shri Swai's dedicated advocacy for millets as an essential component for sustainable agricultural growth aligns with the sense of the International Convention on Millets. With these words, may I request Honorable Minister to kindly address us. समस्त को नमस्कार। संजोगर कथा आज है मांडिया दिवस। आउ गोटे संजोगर कथा गत वर्ष आमर मार्गशीर मास गुरुवार रे पड़ीथिला मांडिया दिवस। एथर आमर मांडिया दिवस शुक्रवार रे पड़ीछि, किंतु आंतर्जातिक ए जो सम्मिलनी कन्वेंशन एटा आमे 2 दिन धरी करिछु। आज है उद्यापनी दिवस एवं सौभाग्यर कथा आज आम सांगे अछंती। गतकाली आमर मान्यवर जनता मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आसी आपको उद्घाटन करथिले। आज सौभाग्यर कथा आमर मान्यवर महामहिम राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय आम मध्य आज आसी। बहुत 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 खुशी लगुच। समस्त को निवेदन करी गोटाए जोरदार ताली देवे ताको पाई। मान्यवर राज्यपाल श्रीयुक्त रघुवर दास महोदय, मान्यवर मंत्री अनुसूचित जाति जनजाति और संख्यालघु पछुआ वर्ग उन्नयन एवं आईन मंत्री श्रीयुक्त जगन्नाथ सारका भाई, मान्यवर मंत्री महिला और शिशु विकास और मिशन शक्ति विभागर भौणी श्रीमती बासंती हेम्ब्रम, पश्चिम ओडिशा उन्नयन परिषदर अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख परामर्शदाता श्रीयुक्त असित कुमार त्रिपाठी महोदय, फिकिर सभापति श्री सुबरकांत पंडा
महोदय आम डिपार्टमेंटर प्रमुख शासन सचिव श्रीयुक्त डॉक्टर अरविंद पाढ़ी महोदय, कृषि निर्देशक प्रेमचंद चौधरी एवं उद्यान कृषि निर्देशक श्रीयुक्त रोहित लेंका महोदय, उपस्थित मान्यगण व्यक्ति, कृषि वैज्ञानिक, कृषि उपदेष्टा, वरिष्ठ अधिकारी और आदरणीय कृषक भाई भौणी और महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य एंड एवं the galaxy of members, scientists and others, those who have gathered here in Bhubaneswar on this occasion from across the globe. I congratulate you to have come to Odisha. I also welcome you and bid you adieu. गणमाध्यम प्रतिनिधि गण समस्त को नमस्कार। दुई दिन अंतर्जातीय पुष्टि स्वास्थ्य सम्मेलन उद्यापन समारोह को समस्त को स्वागत करुच्ची। Before my address on this occasion, I take this opportunity to welcome Honorable Governor of Odisha for his new assignment to a state similar to his own home state of Jharkhand, which is like our own state, blessed with the rich cultural heritage of indigenous people who form a significant population of our two states. We are almost similar in language, in all our behavior. I hope he will use his rich experience in public life for the development of Odisha with a sense of belongingness. And I welcome him to the world of Lord Jagannath. मु जगन्नाथ देश को आपन प्रथम मीटिंग रे बहुत बहुत स्वागत करुच्ची सर। कृषि होउचे ओडिशा अर्थनीतिर मेरुदंड। लोक संख्यार प्राय 2/3 कृषि और आनुषंगिक कृषि उपर निर्भर करी जीविका निर्वाह करती आम राज्य रे। राज्य सरकार कृषि और कृषकों विकास को सर्वाधिक गुरुत्व प्रदान करी कृषक मानक आय वृद्धि निमंते अनेक गुड़िए जुगान्तकारी योजना कार्यकारी आम डिपार्टमेंट तरफ करुचंती। आम चाषी भाई और भौणी मानक कठोर परिश्रम, राज्य सरकार का वर्धित बजेट एवं आम विभाग आंतरिकतार सह कार्यक्रम परिचालना फल आम कृषि उत्पादन विशेष भाव खाद्य शस्य पनीपरिया माछ अंडा कुकुड़ा मांस आदि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पारिचु। तेबे संप्रति विश्व में देखा देइथिबा जलवायु और विश्व तापनर तज्जनित प्राकृतिक विपर्यय जोगु कृषि और कृषक सबुठारु अधिक प्रभावित होइछथि। एपरि संकट रे मुकाबिला करिया पाई, ए संकट को मुकाबिला करिया पाई एवं ताको मुकाबिला करी कृषि और कृषक मानकर कृषि कार्य को सहज सरल एवं जलवायु सहनशील पुष्टि शस्य कार्यक्रम मिलेट चाष एक समुचित विकल्प भाव में उभा आम नुहे सारा विश्व में मिलेट्स केवल जलवायु सहनशील नुहे पौष्टिकतार भरपूर एक सुस्वादु खाद्य। यही परिप्रेक्षी पुष्टि शस्य मिलेट्स चाष दिगरे राज्य सरकार का मिलेट मिशन एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप एवं यह अत्यंत फलप्रसू बोली स्वीकृत एवं सब्यस्त होली जहाँ राज्यर क्षुद्र नाममात्र चाषी महिला मान अधिक लाभ मिली। एठारे उल्लेखयोग्य जे मिलेट्स आउ केवल जनजातिर खाद्य हो रही ना, स्वास्थ्य सचेतन साधारण लोकों मध्य मिलेट्स प्रस्तुत खाद्य चाहिदा क्रमश वृद्धि पाइबार लगी। यही परिप्रेक्षी में मिलेट शस्यर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाइबा दिगरे राज्य सरकार ध्यान केंद्रित करिसेंती। वी हैव कंसंट्रेटेड आवर एनर्जीज फॉर दिस। लोक मानकर पुष्टि निरापत्ता को सुनिश्चित करने दिगरे मिलेट शस्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका संपर्क में कौन दुई मत ना। मिलित जातिसंघ मिलेट्स गुरुत्व को उपलब्धि करी 2023 चलित वर्ष को आंतर्जातिक मिलेट वर्ष भाव में पालन करने घोषणा करिसेंती। एवं ये घोषणा करने पूर्वर आमर मुख्यमंत्री दूरदृष्टि संपन्न कार्यक्रम जोगु ओडिशा सरकार मिलेट चाष उपरे गुरुत्व दे आसी एवं मिशन शक्ति एवं मिलेट मिशन ए दुईट को
कन्भर्जेंस मोड रे कार्यक्रम करी लोकों को आय किभली बढ़िबो द्विगुणित हबो से कार्यक्रम रे आम सरकार ताकर मनोनिवेश करिसथि। ओडिशा मिलेट मिशन गठन हेबा पूर्वरु किछि सीमित अंचल रे मिलेट विशेष भावे मांडिया चाष होउथला। राज्य प्राय 30,000 हेक्टर अंचल रे लोके मांडिया चाष करुथले, किंतु ओडिशा मिलेट मिशन विभिन्न इंटरवेंशन फल रे आज मांडिया और अन्य मिलेट्स जातीय फसल 2 लाख रु भी अधिक परिमित जमी रे चाष करा जाउची। ए 2-4 वर्ष भितर ये हला आम उपलब्धि। एई वर्षटारू राज्य रे 30 गोटी जिल्ला रे 177 ब्लॉक रे मांडिया चाष पाई आमे प्रोत्साहन जोगाउछु। तेणु आगामी दिन में अधिकरू अधिक मांडिया चाष हेबो एवं उत्पादन मध्य हेबो। आमको स्वीकार करने को पड़ो जे आम राज्य में मुख्य खाद्य शस्य हूँ चाउल कि भात, मिलेट्स नुहे। किंतु किछि राज्य में भारत वर्ष रे यथा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा मिलेट्स जातीय खाद्य विशेषतः बाजरा होउची मुख्य खाद्य। से राज्य मानक गहम कि चाउल नुहे। से राज्य मानक गहम कि चाउल तकर मुख्य खाद्य नुह, बाजरा है मुख्य खाद्य। तेणु ओडिशा मिलेट्स मिशन पाई प्रथम चैलेंज थिला अधिक उत्पादन सहित किपरि भावे मिलेट्स विशेष भाव में मांडिया को बहुल भाव आदृत करा जाई परिबो। एही लक्ष्य हासिल करिवा पाई 3टी स्ट्रैटेजी आमे ग्रहण करिथिलु। नंबर 1 प्रथम चैलेंज सरकार का विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजना जेभली भाव में पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील, अंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि मांडिया एवं मांडिया प्रस्तुत खाद्य को प्रमोट करवा जहाँ बहुत सफल होती, जो आमर मुख्यमंत्री सबु बेले आमको निर्देश देइछथि। द्वितीय सेकंड चैलेंज क्षेत्रु साधारण लोकों को थाली को मांडिया नेबा पाई विभिन्न कार्यक्रम आम ग्रहण करछु, जो हॉस्पिटल मानकरे, सहरांचल रे स्कूल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मानकरे, मास कंजम्पशन सेंटर गुड़िक मांडिया को प्रचलन करने आम राज्य सरकार को तरफ विभिन्न इंटरवेंशन करा जाउछि। एवं तृतीय प्रचेष्टा है सबु प्रचेष्टा फल जदि मांडिया को सुस्वादु करि पारिबे नाही तेबे जबरदस्त जदि लोकों को खुआइबे लोके ताको ग्रहण करिबे नहीं। ये आमर अंडरस्टैंडिंग, दिस वी अंडरस्टैंड। सेइथि पई सबु प्रचेष्टा फल जदि मांडिया को सुस्वादु आमे करि पारिबा नाही तेबे जबरदस्त खुआइले सुद्धा लोके ताको ग्रहण करिबे नाही। तेणु आम विभाग विभिन्न होटेल, रेस्टोरेंट, न्यूट्रिशनिस्ट एमान को एकाठी करथिले। आज मध्य आम ए 2 दिन है एकाठी करिछु। ताको सहित मिसी नूतन सुस्वादु व्यंजन प्रस्तुत करी प्रचार प्रसार माध्यम रे लोकों को पाखे पहुँचाऊछु। यही इंटरवेंशन फलस्वरूप मांडिया को जाऊ और पेजर सीमित न रखी मांडिया को कुकीज रे, बारमजा, बिस्कुट, सेव परी खाद्य पदार्थ से भली खाद्य पदार्थ प्रस्तुत करा जाउछि जहाँ डिमांड बहुत बढ़ी। ओडिशा रे मांडिया चाषर आउ एक गुरुत्वपूर्ण दिग होउछि एही कार्य यथा मांडिया उत्पादन, विक्रय, प्रक्रियाकरण दिगरे महिला मानकर अवदान, माँ मानकर अवदान ये टोटल मिशन पछरे किभली अछि ना मु खुशी एवं गर्वित जे आज मांडिया कार्यक्रम सिंह भाव से मुंडे। They have taken the responsibility to see that Mandia goes to the plate of the common man. माँ माने माननीय मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण विजन यह एक अभिन्न अंग। आज मोर छाती कुंडे मोट हो जाउछि जतले कोरापुट, कंधमाल और कलाहांडीर किंबा केउझर केउ अनामधेय ग्रामर मो माटीए दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, लंडन, पेरिस परी सहर को जाई निजर अनुभूति अन्य मान को वर्णना करुछंती, पृथ्वी को जनाउछंती एवं यह आम समस्त निश्चित भावे गर्वर विषय। ओडिशा पाई यह एक उपादेय एक्सपीरियंस। राज्य सरकार को पक्षरु प्रति वर्ष आम नवेम्बर 10 तारीख को अर्थात आज दिन को स्वतंत्र भाव में मांडिया दिवस पालन करुछु। आंतर्जातिक मिलेट वर्ष पालन अवसर में एठारे अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि शस्य कन्वेंशन आयोजन एक अभिनव एवं उल्लेखनीय प्रचेष्टा। सारा राज्य तथा देशर अनेक चाषी, देश विदेशर अनेक प्रतिनिधि यही सम्मेलन में भाग नहीं
कृषि क्षेत्र में होइथिबा सर्वशेष प्रयुक्ति विद्या और विज्ञान और अग्रगति समय रे जानिबार सुजोग दैछथि एवं ताकर इंटरैक्शन फल रे जहा किछु आमको उपादेयता मिलिबो ताकू आमे विल कैरी इट फॉरवर्ड आंतर्जातिक सम्मेलन जेपरी सबुठारु अधिक कृषक उपयोगी होई परिबा सेथि निमंते आम विभाग तरफ विशेष दृष्टि आमे देइथिलु एवं आसतु सेइथिपाई मु पुणी थरे कहबी जे जो मिलेट्स रो जय यात्रा ए जय यात्रा रे आज ठारू आउ गोटे ऊपर पहाच को आमे जिबा एवं मिलेट्स को आम थाली ऊपर आनी पहुंचेबा आम खाद्य बास्केट रे तार स्थान दबा बट बिफोर आई कंक्लूड a word of caution to everybody associated with millets, especially for our department. Yes, we have achieved a lot, but still there is miles to go. While acknowledging and basking with our laurels, let us not be complacent. We must work harder to ensure to bring back the lost glory of millets as a prime food back again into the plates of the people, common people, not as dietary supplement, but as a main food. मु पुणी थे सम्मेलन में जोग देइथिबा समस्त कृषक भाई भौणी एवं देश विदेशर प्रतिनिधि मान को आंतरिक शुभेच्छा एवं कृतज्ञता जनाई मोर वक्तव्य सांग करुच्ची धन्यवाद जय हिंद वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ Thank you, Honorable Minister, for your noteworthy address and for showcasing how Odisha is leading the way in promoting the millet mission. Ladies and gentlemen, I'd like to now request our Honorable Governor of Odisha to kindly unveil the significant report on millets and SDG in Odisha by the Department of Agriculture in consultation with the Department of Planning and Convergence. Ladies and gentlemen, to acknowledge and encourage non-ragi millets cultivation, we will now announce the winners for the exceptional contribution in the field of non-ragi millets cultivation. I would like to request Honorable Governor to kindly encourage and honor our awardees with a photo opportunity. I would like to now invite the winners to please join us. And I request our audience to please encourage them with a thundering applause. The first prize goes to Shri Chidananda Pradhan from Sansahajabali Gasyalat Bargad. The second prize goes to Srimati Jyoti Dang from Bartoli Jhunmur Kurmunda Sundargarh. And the third prize goes to Shri Jaideep Raika from Rumunda Udaygiri Gajapati for the exceptional contribution in non-ragi millets cultivation. Congratulations to all the winners. To celebrate the International Year of Millets, different competitions were organized at the district level, and the winners of the district level competition for the final round of competition at the state level. May I now announce the names of the winners of the students for the essay competition.
In Millet essay competition, first prize goes to Sudarshan Senapati from class 8 from Baleswar. Second prize to Chumki Pal, class 10 from Bhadrak. And third prize to Pranab Shankar, class 10 from Mayurbhanj. And now our students for the Millet extempore competition. Jasmine Bhoi, class 10 from Bolangir, and Subhasmita Sau, class 9, Keunjhar. Together they have won the first prize. Swasti Sneha Hasni, 8th class from Bodh, and Saina Mili, 9th class from Sundargarh for third prize. We have Manaswini Das, 10th class from Kendrapada. And for the students quiz competition, the first prize goes to Ramesh Jena, class 7 from Kendrapada. Om Prakash, second prize. Om Prakash, 7th class from Cuttack. And the third prize goes to Arindam Pradhan from 7th class Sonpur. And now, ladies and gentlemen, for the cooking competition for the SAG. And the first prize goes to Binoduni Pradhan. Second prize to Sabita Raut. And third prize to Devjani Das. Heartiest congratulations. And now for the winners of the cooking competition by students. First prize, Saubhagya Kumar Barik. Second prize, Jayashri Kaur. And third prize to Ambika Nanda. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen. Please encourage our winners today. We would like to now felicitate a few artists from the BK Art School for the beautiful work in curating art in this International Convention of Millets. May I invite Mr. Manas and his artists to please join us on stage. Let's have a big round of applause for them as well, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please encourage our winners today. They have done an exemplary work. Thank you, Honorable Governor and respected dignitaries. Ladies and gentlemen, we are extremely honored and privileged to have with us our chief guest for this valedictory session, the Honorable Governor of Odisha, Shri Raghubar Das, His Excellency's distinguished leadership and commitment to the state's progress and agricultural development resonate deeply with the spirit of this convention. We eagerly await Honorable Governor's address, certain that his profound insights will guide us to a future anchored in sustainable agricultural practices and fortified food security. With these words, may I now request Honorable Governor of Odisha to kindly deliver his valedictory address. जय जगन्नाथ। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मिलेट्स के कार्यक्रम में उड़ीसा सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप स्वाई जी, एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग के माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ सराका जी, बाल विकास एवं मिशन शक्ति के माननीय मंत्री श्रीमती बसंती हेम्ब्रम जी, मुख्यमंत्री उड़ीसा के प्रधान सलाहकार और अवकाश प्राप्त राज्य के मुख्य सचिव श्री असित कुमार त्रिपाठी जी, विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद पाढ़ी जी, कृषि विभाग के निदेशक श्री प्रेमचंद चौधरी जी, हॉर्टिकल्चर के निदेशक श्री रोहित कुमार लिंका जी, फिक्की के अध्यक्ष श्री शोभकांत पांडा जी, और कार्यक्रम में पधारे साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, जापान, फिजी, नेपाल और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के
सभी प्रतिनिधिगण, इस इंटरनेशनल मिलेट्स कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, अपना मन को समस्तों को मोर हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मुझ यही अंतर्जातीय सम्मेलन नेरे जोन दे विशेष आनंदित उपस्थित समंतु को श्रद्धा और सम्मान जगाऊ छी। सबसे पहले मैं रागी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में किसानों, WSH, GS, FPO, भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, अफ्रीका और अन्य देश के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप, विशेषज्ञों का मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रागी पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए मैं उड़ीसा सरकार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। रागी हमारे भारत का पारंपरिक अनाज है। भारत विश्व में मोटे अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी है। ये फसलें अक्सर बहुत कम रासायनिक इनपुट वाले शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। चावल और गेहूं की तुलना में रागी में सूक्ष्म पोषक तत्व भी अधिक होते हैं और प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। इन विशेषताओं के कारण उन्हें अक्सर जलायु स्मार्ट फसलें कहा जाता है। जो प्राचीन अनाज भुला दिए गए थे, उन्हें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से लोगों के स्मृति में वापस लाया गया है। भारत सरकार ने 2018 को संयुक्त रागी वर्ष घोषित किया और समाज के सभी वर्गों के बीच रागी को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया। एक गेजेट अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने रागी और कुछ अन्य फसलों को पोषक अनाज घोषित किया। पोषक अनाजों की इस ब्रांडिंग ने गरीबों के भोजन के रूप में मोटे अनाजों के धारण को भविष्य के भोजन में बदलने में मदद की है। भारत सरकार ने रागी को बढ़ावा देने के लिए 2018 को राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित किया। भारत के सभी राज्यों और हितधारियों तक रागी के महत्व का संदेश पहुंचाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया। रागी को एक वैश्विक आंदोलन बनाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय रागी वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय रागी दिवस के दौरान भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। सभी दूतावासों, सरकारी विभागों, अनुमंडल संगठनों, रेलवे और कई अन्य लोगों का खाद्य उत्सव, प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने और अपने संबंधित कैंटीन खाद्य मेनू में रागी को शामिल करने के लिए एकजुट किया गया। इससे समाज के हर वर्ग में व्यापक जागरूकता पैदा हुई। संसद में घोषणा करके रागी का नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया। रागी का मूल श्रृंखला पर सहयोग का पता लगाने के लिए
अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण देशों की सक्रिय भागीदारी के साथ रागी पर एक वैश्विक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। भारतीय रागी अनुसंधान संस्थान को रागी पर उत्कृष्टता के लिए वैश्विक केंद्र घोषित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन पूर्व और शिखर सम्मेलन के दौरान रागी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। G20 के अलग अलग बैठकों के दौरान मेहमानों को रागी की रेपसी परोसी गई। वर्ष का मुख्य आकर्षण वह था जब माननीय प्रधानमंत्री जी को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस द्वारा मेनू में रागी शामिल किया गया था। इस प्रकार भारत सरकार स्थानीय रागी को वैश्विक ब्रांड में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैं मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने की उड़ीसा की भारी योगदान और भूमिका को देखकर भी बेहद प्रसन्न हूँ। मोटे अनाज को बढ़ावा देने में उड़ीसा अग्रणी राज्य रहा है। नीति आयोग और भारत सरकार ने उड़ीसा रागी मिशन को विभिन्न राज्यों द्वारा दोहराए जाने के लिए एक मॉडल के रूप में पहचान बनाया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम में ने उड़ीसा रागी मिशन को ऐसी मॉडल के रूप में पहचाना है जिसे पूरे भारत, अफ्रीका और वैश्विक दक्षिणा में दोहराया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से निकला नीति रोड मैप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के भविष्य को आकार देगा। मैं एक बार फिर इस भव्य आयोजन के लिए कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रयासों का सराहना करता हूं और मैं सभी उन हित साधकों और संगठनों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने रागी को लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारे प्रयासों का समर्थन किया है। वंदे उत्कल जननी, जय हिंद। बहुमूल्य संबोधन के लिए धन्यवाद। Thank you, Honorable Governor of Odisha, for your noteworthy valedictory address. Ladies and gentlemen, I would like to now invite Shri Prem Chandra Chaudhary, Director of Agriculture and Food Production, Government of Odisha, and request him to kindly propose a vote of thanks. थैंक यू। प्रथमे सबको नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय महामहिम मान्यवर को, राज्यपाल उड़ीसा को धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने आज अपना बहुमूल्य समय निकाला और वैलिडिक्टरी फंक्शन जो हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन का है उसमें अपना योगदान दिया, जिसके लिए उनके मार्गदर्शन के लिए मैं उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद सर। I also express my gratitude to Honorable Minister Agriculture and Farmer Empowerment Department. तांकर लीडरशिप और सपोर्ट रे आमे एते बड़ो फंक्शन आयोजित करी छु, तांको बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँ छु मु। I express my thanks to Honorable Minister SC/ST Development से आज ही हमको ये वैलिडिक्टरी फंक्शन रे समय देई छंती, हमको बहुमूल्य मार्गदर्शन देई छंती। I express my special thanks to Principal Advisor to Honorable Chief Minister Sri Asit Tripathi sir. आमे तांकर बहुत मार्गदर्शन रे बहुत नुआ नुआ काम करी छु एंड ये मिलेट कन्वेंशन पाई भी also got his blessings. I express my मु धन्यवाद जनाऊँ छु WCD मिनिस्टर मैडम को से भी एठी आसी करी हमको बहुत बहुत मार्गदर्शन देई छंती, तांकर बहुमूल्य समय देई छंती। I express my special thanks to Principal Secretary Agriculture Department, तांकर लीडरशिप एंड तांकर सपोर्ट रे हमें एते बड़ो फंक्शन सफलता पूर्वक जो मुको भी हमें सफलता पूर्वक ताको ऑर्गेनाइज कर पा रही छु। I extend my thanks to President Fiki because तांकर टीम भी हमार इवेंट पार्टनर अछंती एंड दे हैव वर्कड हार्ड वेरी वर्क और इटा बहुत भलो रे पूरा
फंक्शन ହେଇଛି Director Horticulture, officials from various departments, CGIR institutions, school, colleges, hotel and restaurants, delegates from the various states. I extend my thanks to everyone for the participation and enlightening us. Friends from media, last 2 दिन से माने बहुत भलो रे हमार इवेंट को कवरेज देई छंती और पॉजिटिव ये करी छंती तांको बहुत बहुत धन्यवाद. सबू फार्मर माने एसएचजी माँ माने जो बहुत डिस्ट्रिक्ट्स रे एठी आसी छंती तांको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद because they have come from various parts of the state. तापर special mention I would make officials of my department, Directorate of Agriculture, Horticulture and Soil Conservation and Department. They have contributed not only since 2 days, they have done hard work since almost 2 months. So I have a special thanks for them. Not only they, friend from the Wasan team members of the Wasan and FICCI, event management, एते की जो देखा जाऊ छी 2 दिन भितरे ता पछरे बहुत हार्ड वर्क आछि and every one of them have given their best. So thank you all of them, and if I am forgetting anyone for thanking you, please include yourself in my thanks, vote of thanks. Thank you. Namaskar. Pande Utkal Janini. Thank you, Shri Premchand Chaudhary, for your warm vote of thanks. Ladies and gentlemen, please join me once again in extending a heartfelt thanks to Honorable Governor of Odisha for gracing this occasion. जन गण मंगल